Hello, welcome again to Safety Shots. So this is basically the fifth video of the series, and today's topic is mock drill type or and organizing the drill, and basically type of mock drills. Now, to start with, no one expects to have fire or disaster at work, but they happen every day in office buildings, in factories, in facilities across the countries, across the globe. Correct. But the truth is that when any fire breaks out or any incident or any accident happens, employees' life can be on the line. You or your company leaders, need to know how to conduct a mock drill at work. By scheduling a regular mock drill, your company can plan, a potentially dangerous situation and prepare employees to exit the building safely. Now, mock drill are great examples of why emergency preparedness professionals typically say that we hope for the best and prepare for the worst. Of course, no one really thinks that their work is going to go up in flames, or one is going to be injured, or the equipment is going to be damaged, or the facility, anything happens in a facility. But emergencies of you know don't even but in case of emergencies, many people don't even know where are the exits. Now it is possible that we can think of that, it, but while evacuating from the evacuation route, you're partially blocked, or doors are jammed, or occupants may carelessly impact your plans or efforts to vacate the premises at the same time. So regular mock drills will reveal all these issues. So basically होता क्या है? होता ये है, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये है पांचवा वीडियो हमारी सेफ्टी शॉर्ट सीरीज का, जिसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉक ड्रिल टाइप और ऑर्गेनाइजिंग दिस ड्रिल। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझिए कि भाई हम लोग, कोई भी आदमी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि भाई हमारी फैसिलिटी के अंदर आग लग जाए या कोई इंसिडेंट हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए। तो इसीलिए जो इमरजेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं वो हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि भाई होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो जब आप किसी भी तरह की मॉक ड्रिल को कंडक्ट करते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, उससे आपको काफ़ी सारी नॉलेज और इनसाइट्स मिलती है। अरे यार, ये हम लोगों ने क्या किया हुआ है। करेक्ट। और इसीलिए ज़रूरी ये है कि जहाँ पे फैसिलिटी है वहाँ पे ही मॉक ड्रिल की जाए। ऐसा नहीं है कि भाई आज साफ कर लो, भाई रोज की कंडीशन जो थी। मॉक ड्रिल्स आइडली जैसे बोलते हैं ना सर, आपने बात जरूर करके रखिए, लेकिन कभी भी सरप्राइजिंगली कंडक्ट करिए, तब उसका रियल सेंस आपको पता चलेगा और लर्निंग्स तब बाहर आती हैं। जैसे आपने प्लान कर लिया, हाँ भाई चलो आज रास्ता साफ कर लो, भाई रोज तो यहाँ पे ड्रम पड़े रहते हैं, आज आपने साफ कर दिया तो क्या फायदा हुआ। करेक्ट। रोज वो रास्ता ब्लॉक रहता है, रोज कभी दरवाजा ब्लॉक रहता है, ये कंडीशंस भी आ सकती हैं आपके साथ में। तो आपको भले ये पता है कि यहाँ से एग्जिट होना है, लेकिन ये कंडीशंस आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए मॉक ड्रिल जो है ये सारे गैप्स को ना आपके सामने लाके खड़ा कर देती है, इसीलिए ये चीज़ करना आवश्यक हो जाता है। करेक्ट। सो आइए शुरू करते हैं हमारा पूरा सेशन, और आज भी हम लोग इसको भी एक शॉर्ट फॉर्म नया शब्द कुछ सीखेंगे। करेक्ट। सबसे पहले तो टू स्टार्ट विद, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मॉक ड्रिल. In this video, this video was ideally supposed to be before planning the mock drill वाला वीडियो, लेकिन फिर भी जब जागो तब सवेरा। लेकिन यस, हम लोग ये वीडियो जो है प्लानिंग द मॉक ड्रिल से पहले होना चाहिए था, लेकिन टाइप्स ऑफ ड्रिल के बारे में हमें सवाल आए तो हम लोग ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। सो लेट अस टेक बाय द एग्जांपल. ओके, so we are taking the example of fire. So firstly you must develop a detailed risk assessment or escape or evacuation plan, as we discussed in mock. Let's explain M. So what is mind? When you put mind, when we say the mind, we must firstly identify where fire can happen. In doing so, you must first identify fire ignition source. This means identifying potential source of ignition of fire, from where fire can start. It can be electrical source, mechanical source,
or sometimes some process. By understanding this, you will be easily able to identify the situation and potential fire, how it can start, which requires a real thought process to counter fire from happening. This forms a detailed fire evacuation plan. Now comes practical implementation of plan, which gives proper thought, which has been given a proper thought process. So step one is to ensure stakeholders are on board. When we have identified all possible sources from where fire can happen and how it can start, may it be process operation, or may it be operation mistake, it can be electrical source or any other possible way, we can take one example of real life situation and can plan to communicate from document to all the concerning people for practicing it. Now this is where comes our step 2. Remember, we are still on mind, correct? Where second step is to communicate with people. What is to be communicated is in all possible cause. Now while planning a mock drill, you can take one combination of chain of action that will lead to a disaster, or how this can happen. So when we are communicating what we are trying to do, we are doing basically a brainstorming at the stakeholder about the process and the potential hazard that can lead to disaster, and how person can get injured. It's not necessary that it is fire. It comes to the smallest of the problem, and uh, you know and taking worst case scenarios like nip points or pinch points or trapped or something, something can fall. So once people are communicated of the plan or action you are going to take, set a goal, right? So this forms our second step of mock, that is organize. तो अभी तक हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जैसे जब आप मॉक ड्रिल कंडक्ट करना चाहते हैं तो मॉक ड्रिल कंडक्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को ये सिंपल 5 स्टेप्स हैं, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाएंगे। आप स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? लोग जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी एरिया में काम कर रहे हैं, उन्हें ऑन बोर्ड लाइए। अब उनसे जानिए कि भाई आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं, करेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, हम लोग एक डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट और एस्केप और इवैक्यूएशन का प्लान बनाएंगे। ये जो प्लान है इसके अंदर सारी एक्टिविटीज हमने लिस्ट डाउन करी हुई है। हाँ जी। अब ये जो एक्टिविटीज लिस्ट डाउन करी है, इन एक्टिविटीज को लेके हम लोगों को कम्युनिकेट करेंगे कि भाई देखो इस एक्टिविटी के अंदर ये चीजें हो सकती हैं। हाँ जी, ये पोटेंशियल हैजार्ड है इसके अंदर। हाँ जी है। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कई बार क्या होता है, वो लोग सोचते हैं नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग तो इतने सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हो सकता है उसकी जानकारी हम उन्हें देते हैं कि भाई इसके लिए तैयार रहिए, ये चीज हो सकती है आपके केस में। अच्छा, हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हाँ सर, ये हो तो सकता है। हाँ, तो बस वी आर जस्ट ट्राइंग टू मॉक इट अप, ताकि जब अगर कोई गलती से भी अगर ऐसा सिचुएशन फंस जाए तो आप क्या करेंगे, वो समझाते हुए हम लोग मॉक ड्रिल को प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में आता है कम्युनिकेट विद पीपल। तो कम्युनिकेट विद पीपल मतलब ये जो हम लोगों ने बातचीत करी, हम लोगों ने सारे रिस्क को आइडेंटिफाई किया, क्या क्या हो सकता है, पोटेंशियल कॉज कैसे हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फायर हो, निप पॉइंट है, पिंच पॉइंट्स हैं, ये सब चीज़ें भी तो हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके भी हम उनको कम्युनिकेट करेंगे। वंस दिस कम्युनिकेशन इज डन, तो सेकेंड पार्ट आता है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग इट। अब ऑर्गेनाइज जब करेंगे तो आप ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करेंगे, यू हैव टू सेट अ गोल। तो व्हाट काइंड ऑफ गोल्स यू विल सेट, कि भाई हम लोगों का गोल ये है कि आज हम लोग इस चीज़ को मॉक करने वाले हैं, और ये हमारा हमने गोल सेट किया है कि भाई इसके अंदर हम लोग क्या बचाने वाले हैं। व्हाट आर वी ट्राइंग टू, when we are setting a goal, so what we are trying to save, we are either trying to save a human life, we are trying to save or the facility, or we are trying to save the machine or equipment, or we are trying to save the process. So based on the SOPs, whatever the SOPs are prepared, we will systematically plan or set a goal. Now when we set a goal, so naturally whatever goals are set, we have to practice it also. So we have to rehearse. So like in this in like we had taken an example of fire, so we have to rehearse the fire drill, okay, where fire can happen, how it can happen, and always make sure that it happens within the premises, and don't clean anything. Okay, you instruct people about it, and then surprisingly you have to conduct. So only then
what all gaps persist in the area will come out. So ऐसा नहीं है कि भी प्लान कर ले, हाँ हम लोग प्लान करने वाले हैं कल इतने बजे होगा, ऐसा मत करिए, हम कभी भी प्लान कर सकते हैं. सो यू कंडक्ट अ मीटिंग, यू से कि भी हम लोग ये चीज़ का प्लानिंग करने वाले हैं. यस, हम लोग ये चीज़ का प्लानिंग करने वाले हैं, लेकिन उस चीज़ के बारे में जानकारी मत दीजिए. मॉक मतलब आप कभी भी उसको इमरजेंसीज को क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट. यू हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन एंड देन यू विल रिहर्स इट. नाउ व्हेन यू आर रिहर्सिंग इट, तो आपको एक आदमी को एज एन ऑब्जर्वर भी डिप्यूट करना है, ताकि वो ये ऑब्जर्व करे कि भाई हाँ हम लोगों ने क्या किन चीज़ों के बारे में बात किया था. उसका एक लिस्ट होगा और वो लिस्ट के अंदर टिक करते जाइए कि भाई हाँ ये चीज़ हुई या नहीं हुई, ये चीज़ हुई या नहीं हुई, ये चीज़ हुई या नहीं हुई. तो जो चीज़ें हम लोगों ने प्लान किया था, वट एवर we try and mimic, or we try and portray that okay we are going to do this. So whether how many actions were performed and how many actions we missed or how many difficulties we had, so then we counter. Finally, to knock the problem is about countering all the issues that were raised, or all the concerns that came out. So while appointing an observer, what you are doing, you are clocking it, correct? So we put the mind to it, we have organized it by setting goals and rehearsing it, we have appointed an observer to clock it, and then when we see and observe that all these things are done, then we finally come to a conclusion that yes, let us knock the problem. So this answers how to conduct a mock drill or how to organize it. Now let's see what are the types basically which the video is corely focused on. So basically, when we understand a mock drill process, so uh, this answers basically, previously we just answered that what types of how to conduct a mock drill. By this, what we have understood is how to perform the mock drill in 5 simple steps. So what are the types based on the activity we plan? We have mock drills, and the word that we give today to understand type of mock drill is P fumes. Now, where P stands for process related drills. Now, process related drills are like you have a set defined process, and in that defined process, everything comes after. So the entire process is there. So, and now how the process can harm individual, facility, environment, and what measures we have to take to protect ourselves. And for from now, a process drill function, all parts will be part of drill, like fire drill, utility drill. So fire can happen, so you can have individual fire drill, okay. So you utility drill, okay, the utility functions are working properly or not, you can have the drill for that. Mechanical function, so any mechanical function, the system is working, so there will be mechanical functions also. So mechanical function, okay, whether this function is working properly or not, what if you get stuck in that, what if some guards are removed, what if anything goes wrong. Electrical function, so if electrical panel there is a short circuit or something like that, spillages, so all that can happen, right? So all these are basically the types of drills. So you can conduct these drills with the 5 step process that we have defined. So it is simple word P fumes, everything is related to process. Now you can conduct the entire process drill wherein all the sub elements will be part of, or else you can conduct it individually also. So these are basically the simple forms of drill. So I hope this answers the question how many types of drills are there. Simply remember P fumes, you can conduct it individually or the entire process function. But always remember, the function of drill you are performing should be focused on what? First is saving an individual, saving the process, saving the equipment, saving the facility. What impact or potential danger the event that you are mocking poses should be explained, and the worst case to be explained to individuals or stakeholders who will be affected or impact by the event that follows. So I hope I was able to contribute to the demanded वीडियो. तो ये वीडियो के अंदर सिर्फ रिमेंबर इतना याद रखिए, पी फ्यूम्स, प्रोसेस ड्रिल, फायर ड्रिल, यूटिलिटी ड्रिल, मैकेनिकल फंक्शन ड्रिल, इलेक्ट्रिकल फंक्शन ड्रिल एंड स्पिलेज ड्रिल.
इतनी ही चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए, कई कई लोग बोले अरे सर क्रेन ऑपरेशन, सर मैकेनिकल फंक्शन है। ये चीज़ें ही बेसिक ऑपरेशन में आते हैं। एस्केवेशन अगेन मैकेनिकल प्रोसेस फंक्शन में आप ले सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, इसीलिए पी सबसे आगे है, दैट इज प्रोसेस, एंड देन फ्यूम्स। सो फायर, एवरीथिंग दैट फॉलोज। सो प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है फायर, उसके बाद में आता है उसका यूटिलिटी कनेक्शंस, उसके बाद में उसके मैकेनिकल ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन एंड स्पिलेजेस। सो इन चीज़ को लेके आप ड्रिल कंडक्ट कर सकते हैं। And thank you very much, friends. I hope that I was able to clear this topic as much as possible. Said Safety Short series is focusing on small safety videos. I hope we are able to contribute as much. Keep liking and sharing, and do not forget to subscribe our channel. हम लोग ये सेफ्टी शॉर्ट सीरीज जो छोटे छोटे वीडियोस हम लोग बना के डाल रहे हैं, आपका बहुत सारा ढेर सारा प्यार हम लोग को मिल रहा है। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, like I said, to get the notification of our next videos. Thank you very much, friends.